क्या आप आपके बच्चों को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हो कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सके? डू यू वांट योर किड्स टू बी so much mentally strong that they are able to take their decisions on their own? Then you have landed on the right video. Watch this video till the end to know what is the technique to make your kids learn so that they become mentally sharp. Hello everyone. So this is Sujal and welcome to my channel. Today I have come up with a new video on kids meditation. बच्चों के लिए मेडिटेशन क्यों जरूरी है? Why do kids need to learn meditation? The importance of meditation for kids is very clear. Your kids, the way they grow, the way they develop, the way they see the things, the way they understand the things, their focus, their concentration will increase. बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनके मन में कोई विचार, कोई डेफिनेशंस नहीं होती है. They perceive as they see. But अगर उन्हें मेडिटेशन रेगुलरली हर रोज कराया तो what difference you will see is the way they speak, बात करने का तरीका, the way they think, the way they perceive the things, communication skills, clarity of thought, सही और गलत के बीच का डिफरेंस, the right choice of taking the decisions. Their memory power will increase. The way they speak, since they have a clarity of thoughts, their speech will also be very clear. So, if you want to make your kids meditate, उसके लिए सबसे पहले चैलेंज है कि आपको भी आपके बच्चों के साथ मेडिटेशन के लिए बैठना पड़ेगा. You will have to meditate with your kids. Once you start meditating, your kids will meditate by seeing you. So I think this is the best age to make your kids learn meditation, because in this competitive world, to make your child mentally strong and powerful enough so that they can take their decisions, they can handle the difficult situations, they can handle their stress in a matured and a patient way. I think this is the best gift that you can give to your child for their bright and secured future. So now let us learn how to start meditating. किड्स को शुरुआत में मेडिटेशन के लिए कैसे तैयार करें? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको खुद को भी अपने बच्चों के साथ मेडिटेशन के लिए बैठना पड़ेगा. सो बोथ ऑफ यू विल बी सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजिशन विथ ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर एंड द थंब, एल्बोज बेंड रखेंगे, बोथ हैंड्स ऑन योर नीज, योर स्पाइन, योर शोल्डर्स are down and relaxed, your spine is straight, your neck is straight, your head is straight, and slowly close your eyes. Initially, you will just start with sitting in this pose only for a minute. आप सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करके यही पोज में अपने बच्चे के साथ बैठेंगे. And what you will do is, you will just concentrate on your breath. इनिशियली बच्चे ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करना भी उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो. इट मे बी अ बिट डिफिकल्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क योर किड्स टू से द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इन देयर माइंड. 1 से 100 तक गिनती करने के लिए अपने बच्चों को बोल सकते हैं आंखें बंद करने के बाद. सो दिस इज अ वे यू कैन स्टार्ट योर किड्स मेडिटेटिंग. The second day, you can
ask your kid to just close your eyes and imagine a blackboard in front of them with your closed eyes, and try to make them imagine that he or she is drawing their favorite picture on that blackboard. It may be black or white board. पिक्चर कंप्लीट ना हो तब तक उन्हें कहिए कि आंखें बंद ही रखें. So in this way, slowly and steadily, you will be able to create the habit of making your child sit at one place for at least 1 minute. And I'm sure if you will be sitting with the kid will enjoy this beautiful journey, and slowly we can take your kids into sitting for meditation for more time. So friends,